आपके इंटरव्यू से मुझे ये समझ में आया, बंदी की एचआर स्किल्स अच्छी हैं, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, बंदी की टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, बट कहीं से भी मुझे ये नहीं समझ आया कि आपको मेरी कंपनी में जाना चाहिए। कल के दिन इफ दे सेंड यू चेन्नई, बैंगलोर और वॉट एवर जॉब लोकेशन, डोंट से दिस लाइन, एवरी आंसर शुड बी अलाइन टू कंपनी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सांस भी क्यों ले रही हूँ, कंपनी। हेलो सलोनी, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Hello, sir. Good afternoon, sir. I am fine. Okay, could you please tell me something about yourself? Yes, sir. So, as mentioned, my name is Saloni Kochar and I am from Gadarwara, a town near Jabalpur. And currently, I am in Bhopal and I am pursuing BTech in Information Technology from Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal. And so, as the demand of my field, I have started my programming journey with the very basic yet powerful language C. Then I learned about the concepts of object-oriented programming through Java and then continued coding in the same. And so I have good grasp in the core concepts of Java, and also I am moving towards its advanced concepts, which is also the demand of the project which I have worked on. It's a training and placement application, and it's a desktop application and completely based on core Java. So, and also I would like to mention that I have completed my virtual internship where I learned about the basics of Salesforce and completed the superset module, admin superset module there. So these were my technical skills. Coming to my spare time interest, I would say I like to dance and I like to teach, and also nowadays I'm consuming lot of quality content on YouTube also. So, and about my personality, I would say I am a process oriented person and I am always open to learning. And I like helping people around me, and I always try to make sure that I help, and whenever I find anyone in the place where I have been through, I always try to make their task little easier. And I think this is the reason why I have chose engineering as a career. Now I am looking forward for an organization like yours where I can implement this at broader level. So yeah, that's all about myself. Okay. Saloni, could you elaborate a bit more about your family background? Yes, sir, I can. So, in my family, we are five members. They're my parents, me, and my younger sister. And she is also in the same college in which I am studying. She is also doing her bachelor's. And my young brother, he is youngest of all of us, and he is currently in 12th standard. My father is a businessman and we own a small shop. It is a building material shop. And he is also MA in philosophy and psychology. So we have lots of stories to hear from him about human behavior and so many philosophers. And about my mother, she is a homemaker and she is a very good cook. So due to this, I struggle a little more in hostel food. And so yeah, this about my family. Okay. Saloni, like as you see that this is an era of women empowerment and entrepreneurship. We see a lot of women entrepreneurs, growing Yes, these sir. days. So why don't you think supporting your father in his business and expanding his business would be also a good choice for you? Yes, sir. It can be a good choice, but I don't have much interest in these things and building material shop or any other sort of things. I am more inclined towards the technology, new technologies, and working for the company and basically contributing in the growth of in technological growth. So that's why I have chose this. Okay. Could you please tell any three specialities or any three things which you love about your college the most? About my college. And first of all, being a college here is not very much leniency to the people. Our college is very much discipline oriented. It is known for its discipline, Allen City College from Bhopal. And secondly, placements are very good, which is we cannot deny the fact that after all, the final goal of every student is getting a good company where they can show their skills. So disciplined oriented and place good placements, and
The teachers are also very good, not like other local colleges. State level colleges are generally not very good in their performance, but LNCT is doing good in every field, and they are giving their best to make students which are not academically best, but also in all the areas they are best. So yeah, Okay. that's all. Okay. Could you please tell a bit more about your programming skills? Like, how do you rate yourself in programming, and which programming language you usually prefer? Yes, sir. I prefer. I have started learning C only, but I don't remember the most concepts now, because now I have switched to Java and I'm good in Java, and I can solve easy to medium level questions. So, but I don't. I think that I need to practice more questions on it. So I would rate myself as 6.5 or 7, because my DSA part is not that good. So yeah, these this Okay. much. Suppose I give you a array, and I Yes. want you to find the second largest element in the array. The condition is you are not allowed to sort the array. How can you do this? I just want the logic part. Okay. So if I'm not allowed to sort it, then I will make a loop and traverse it first till I get the first largest element in it. Okay. How you are I will going store to find the first largest element? I will store it in a variable called max and traverse the whole loop. And if again, first of all, I will put ARR zero in ARR zero's value at the max. Then I will run the loop from one first index to the length of the array. And once I get the maximum element, then I will again traverse the loop, leaving that value at the index which I have found the maximum. Then I will traverse the array again and will find the second largest element. Okay. Suppose once again I have an array of size 100, and it's basically a character array. We can store any character from A to Z in the array. Okay, so there will be multiple entries for A, maybe for B, for C, D, and there may be a possibility that one of the alphabet, for example X, Y, or Z, may not even occur, Okay. right? So you have Okay. a array of size 100 with you as the input, and I have pre-filled it with some data values which could be any alphabet from A to Z. Now I want you to tell me the frequency of each element. Like A is occurring how many times, B is occurring how many times, C is occurring how many times. Okay. So I have solved this problem some times back. First of all, I have solved. I What I had done by myself in this problem was I'm traversed the array, and I have made the flag variable in which if I find some element at that position, then I have converted it to true or false one value. Then I have did it, but this is not a good approach. What I have found was using hash map in it. It will be a better approach, where I can traverse hash map, and if I found the element for the first time, I will give it the value as 1. And if I find it again in the hash map, then I will increase the value by 1. Okay, so what would be the time complexity of this particular approach? For hash map, I think big O of 1 it will be big O of 1. Okay, okay. What is the difference between an instance variable and a local variable? Instance variable. Okay. So instance variable is what we have we declared in a when we make a class. Then class is basically when we declared the properties for the object. So in instance variable, we declare instance variable in the class, and every time the object is created, the new instance variable will create it for every new object. Then in local variable, it is created when the function is called, and its lifetime is till the functions block, till the function's life. So this is the major difference between instance variable and local variable. And instance variables are initialized, if not initialized by default, and whereas local variables are never initialized. We have to initialize them if we are using it. Okay.
What is a multiple inheritance? Multiple inheritance is in where a class, a child class inherits more than one classes, then it is multiple inheritance, but it is not possible in Java. Okay. Are It you is sure possible multiple? Are you sure for in multiple inheritance is not possible in Java? for interfaces it is possible. Okay. What is interface? uh, interface is basically interface basically defines the blueprint for the class. It consists of the abstract methods, and we cannot define the methods in the interface. We can just declare them, and the class which implements the interface, we can that class will define the method, or we can say override that method. So, what was the use of interface? If we have the complete class with us, why to create interface? So interfaces, first of all, shows the very important property of object-oriented programming, that is abstraction. Through interface, we can achieve 100% abstraction, and there we declare only the names of the functions and about only their parameters and signature. And when we implement that particular class, then we define it according to our need. Like in a college, we need data of both a student and the faculty, so we can have a method called admission for that. But if we are using that in admission function, uh, admission, then for student we will define it differently, and for faculties we will define it differently. So this is the major use of interfaces. Okay. What is the difference between data encapsulation, data abstraction, and data hiding? Okay, so I will define them. Their difference will be clear through that. Data encapsulation is basically binding of data and its properties and behavior in a single unit called class. It has the word encapsulation has came from the word capsule, which is covering the important properties and from safe from the other classes. So this is data encapsulation, and data hiding is not showing the important properties of a particular object to another thing. And like we can in Java, we can do it while declaring the methods and variables as private, and when we want to use them, we use setters and getters. That this completely shows the use of data hiding. And then data abstraction is basically showing the important details, uh, showing only the important details to the user and hiding the actual functionality of the code. So, you mean to Sorry, say data not hiding showing and the data huh? abstraction are same as per your definition? No, sir. Data hiding and data abstraction are not same. I mismatched definition little bit. Data abstraction means that we show the only the functionality part. We do But not show the the same details thing to you the said in user. data hiding also. Uh, I can give me a second to think about Yeah, that. yeah. Data hiding is. So right now I'm a bit confused between them. Data abstraction is showing making available the actual functionalities and showing the actual details showing and do not showing the actual details. Okay. What do you think? Like most of the companies today use Java. So, what is the most important feature of Java you think? Yes, there are so many features, and personally, when I have started learning Java, I was very much attracted because the features were so easy and so good that I think, yeah, this is the language which everyone should work on it at least once. First of all, it's very simple and easy to code. It is a high level language, so for a programmer, it is very easy, and then it is robust and platform independent is also the most important feature. And at a using level of using, I would say it is also very secure language. It do not use pointers. It make use of reference variables, which are almost like pointers, but
stops the extra access or access and modification. We cannot easily modify or access the data in Java. So security is the major feature of Java, which makes it different from other languages, and so many more I can Okay. elaborate. Could you please elaborate your project? Yes, so my project is desktop application, which is a training and placement application, and in that I can elaborate about its working. It will consist of admin who will manage the overall application, and it will consist of HRs of different companies who can log in the application and can introduce their question papers and their requirements, what they want in the student. And third is students who can also log in it and can choose which company's exams they want to give, and what also, or they can also give tests, and admin can see their test scores, and according to that they can trigger them to for the interview call. So this is overall about my project. Okay. So obviously for every project we face some or the other challenges. So have you faced any hurdles or challenges in your project? Yes, its making was not that easy. Obviously, every project needs much time. So in the starting, I had this idea, but I do not know how to actually implement it. And in the starting, my code was not very good, and it was a mix up of all the functions and methods I have learned and used. But then I got to know about the pattern, which I have also mentioned in my resume. It follows a DAO POJO pattern, which is data access object, and POJO stands for plain old Java object. Through this, I have divided the code of my project into different packages, which is for one is for GUI, second is for JDBC and connections and all, and third was about actual data and everything. So this way, I divided my projects into different packages. So these were the small things which I faced and learned So about them. okay, what do you think is the future scope of your project? Could it be implemented on a large scale and sent to all the colleges for alpha beta testing? Yes, sir. I think it can go. Right now, it's a very basic. I have to work on it. But yeah, I think this is a good idea because still we struggle a lot. We use Facebook groups and WhatsApp for getting the informations, and if we miss any notification of Facebook or WhatsApp, we miss the opportunity. So if we are there with the application, it will definitely gonna work. Okay, so was it a solo project or a team project? No, sir, it was a team project. We were three members in this project, me and my two more friends. And what was your role particularly? I basically I've all although we have completed it in a group project, we knew the functionalities of every package, but most of the time I handled the back end of this project. Okay. What are the steps to connect, database in Java? Yes, sir. So what I have studied, I will try to frame it. There are majorly 6 to 7 steps to the way I have learned it or I have understand it, to connect a No, I, database I with the. basically wants how this JDBC connectivity gets established in Java. Right? First Okay, of all, sir. you have to register the drive class and then, Yeah, yeah. yeah. Yes, sir. So first of all, we will import the packages which will be needed. Then secondly, we will load and register the driver class. Then third, we will obtain the connection object. Fourth, we will obtain the statements, and fifth, we will execute the query, and then we will process the results. Then we will close the connection. Okay. Uh, any of these steps which you would like to elaborate in detail? Yes, I can elaborate about the process. Create a statement and process the query. Once we get the connection object, that is to get connection method, and then create a statement through. I have what I have learned about two methods, that is create statements and prepared statements.
create statements for normal queries, and prepared statements I used to make dynamic SQL queries, to create dynamic SQL queries. And it is dynamic SQL queries can also be done through create statements, but I on internet I have learned about the exception, or it is a kind of threat to the project, this that is called SQL injection, which can happen if we create a dynamic SQL query through create statement and concatenation. So it is better to use prepared statement there. Then prepared statement, we entered the query through prepared statement method, then we can execute query. There are again two functions: execute query or update a query. Execute query is where we want to fetch some result which we will get in the result set interface, and update query if we want to update some data in the database. So yeah, these were the things. Do you have any knowledge of callable statement? Callable statement, I am unable to recall. Okay. How can we delete a particular cell in SQL? We can delete a row through delete command. Yeah, so your video is paused. Okay, No issues, no issues. Yeah, you can okay, continue. it's okay. So we can use delete command to delete a cell, because we can delete record. Ultimately, it will delete the cell also. So delete delete from and table name, and then if we want to, we have to put some condition where, so it will delete one record from that. Okay. So what is the basic difference between delete, drop, and truncate command? Yes, sir. So this is my favorite question, because I have studied it. Delete, truncate, and drop. So delete, I have told, it is used to delete a record, a single record or all the records at once from the table. While truncate is used to delete all the records from the table at once, and only the schema of the table will be left. Then drop command is used to drop full table, schema, records, everything will be deleted, and it can also not be a rollback. So drop command and delete and truncate. What is the difference between having and where clause? So I have I can remember the use of having clause. I have not used it from very long time, but where clause is used to filter out the records filter out some records. Okay. Why do you want to join Capgemini? So because it's a very good company, of course, it is a multinational company. So I will be getting the more exposure here as compared to other companies, and also we are at Capgemini. Also, we are working at various different fields, all the latest technologies. So I will be getting good exposure here and lots of more opportunities here. So I will definitely want to join Capgemini and contribute here. Where is the headquarter of Capgemini? It is in Paris, France. Okay. Any latest rewards or recognitions of Capgemini you remember of? I I when Capgemini visited our campus, I did search about it, and Capgemini had got many awards and recognitions. Uh, but I am unable to recall the actual name of the particular awards. Okay. Any technology which Capgemini usually focuses on? It is focusing on IoT and artificial intelligence. I have read about it. Okay. What are your strengths and weaknesses, Saloni? Yes, sir. So about my strength, I would say, as I have mentioned in my introduction, I am a process-oriented person, which makes me stand out from the others. And I focus more on the small little tasks which have been given to me, rather than worrying about the actual goal. uh, that is ultimately gets completed. And secondly, I'm always open to learning, and I always take healthy criticism, and I never take criticisms never affect me. Like people get think criticism as disrespectful. I don't think so, and I always try where I was wrong, and I'm always on my self development mode.
like what I can change about myself, what I knew I can learn. These are my strengths. Okay, your weaknesses? Yes, sir. Weakness. I would say first of all that I cannot complete anything for the sake of completing it. So sometimes this make me take a longer time than others to complete a task, because I have to go through it from the scratch and know what is its use and everything. But all I take more time, but not up to the deadline. I always complete it before deadline. And secondly, I cannot perform very well in the pressure. Means in my pressure, I am unable to give my 100%. So I think this is my weakness. So, but somewhere due to I know my weakness, so I try to complete things before deadline so that I can give my best in it. And I'm working on both of these things, that and I think I will improve. Okay. Today our country is facing with lots and lots of challenges, as you know. So being a IT engineer, suppose after 10 years, you are a IT engineer and maybe you have joined politics, or maybe you are a very social activist and you are a problem solver, you worry about our country. So being a IT engineer, what problem do you think you can resolve? Being an IT engineer, I know that data is everything today. We have more threats related to data these days. So I can do lot many things. I will be implementing more cyber security development programs and everything, because this should be the major part on which we should be working. And I will also make education and the skill development things very approachable to the students of every class and at every level. I don't want things to be divided according to their approach. I want to make education first of all very accessible, which can be possible through technology, and I think it will happen without my need also. Means in 10 to 15 days, I feel India gonna make some revolutionary changes in the field of education. So I would love to contribute there also. Okay, okay. So just one situational question I want to ask you. Like, suppose you are made the lead of a project, right? You're after 5 years, maybe you are leading a project. So first of all, would you love to have this opportunity? Yeah, sure, of course I would love to lead the project. Okay. And since you Yes, are leading a project, you are the captain of your team. So the entire responsibility of the team is yours, right? Now, suppose yes, you yes, have two very brilliant members in your team, both are equally good. Okay, but the problem is they have internal clashes and they are not willing to work with each other. Due to this, the entire environment of your team is, becoming negative. Your team is suffering yes, from negativity. So first of all, how will you keep the rest of your team motivated, and how will you resolve this clash? And since you are the senior most manager, there's no option of going to the upper level and asking the again a senior regarding this. yes, yes, yes. And one more thing, So work from home is not allowed. If you are saying that one of the employee I'll send for work from home, no, this is not allowed. okay, sir. So first of all, I will try to arrange a meeting for them, and will try to make them understand each other, what where they are clashing, where they are getting clashes, what are one person's ideas, what are other person's ideas, and where they are lacking, and why they are not adjusting with each others and understanding each other. First of all, this can be the solution. And second solution which right now coming in my mind, that I can shift one person to another team or anything, if this is possible, and if this is a good answer, that he can contribute in the company's growth, but in different level from different projects he or she can contribute. If the situation goes beyond controlling, I think this is a good idea. Suppose Capgemini gives you a chance that you can send your team, including yourself as well. You can take your team to a beautiful vacation of 5 to 6 days. What would that vacation destination be, and why? If in India only, then we would prefer going.
First of all, I would ask my team because I'm not very good in knowledge of traveling and all. So I would ask my team where they want to go and what majority will decide. I will See, be more if than you are happy. asking a team, then it's a never-ending decision, and ultimately you will be landing onto your job location only. So if you are given a chance Yes. to take a call, Then yeah, then I will prefer Goa because I think this is everyone's favorite place and everyone wants to go there. And also, Goa plans are always delayed, and some or the other person cancels the program. So if the team lead will say them to go or come with them along, come with them to Goa. So I will okay prefer going Goa. okay. Uh, since you have mentioned that your college has a beautiful placement stats, obviously many companies will be coming and visiting your college. So suppose Capgemini delays your joining by 1 year due to some valid reason, right? And meanwhile some other company comes, similar nature company comes and offers you the same job role, slightly higher package and immediate joining. What would your reaction be in such a situation? In such a, first of all, I will go through how I have performed in Capgemini interview and everything. If it is good, I will definitely wait for some time. Although if No, I know result one is year, announced, result is announced, you are already selected for Capgemini, but your joining is taking 1 year. On the other hand, the second company is offering you immediate joining. Obviously the brand value is little less as compared to Capgemini, but the work role is same and the salary is bit high. okay, so I would wait for Capgemini because it is a very good company. I know that. I thought I have not been selected and I have to I have chances. If I am June. selected there, then I will be waiting and working on my skills so that I can use my time. And there are so many things which I can improve on, and I can do other practice. I told I can practice more questions and everything, and I can wait for it for the Okay. joining. How do you keep yourself updated with new and latest technologies? So mostly I watch Google News only and YouTube content where I find one or two videos related to technology. So I keep myself updated with most of the time YouTube helps me in keep me updated. Okay. So any latest technologies which you are learning these days? Yes, I am very much interested in Salesforce. I got to know about through my college program only, and so I learned about Salesforce. So I am developing interest in it. Although I am open to every technology, I can learn and work on any of them. But if my choice, I would say right now my current interest is very much in Salesforce, and I am doing great in it. Okay, quick rapid fire questions. Any interest in masters? Maybe not now after 10 years. No, sir. As of now, I am not interested. Okay. Any relocation issues? No, sir, no issues. Bond No related issues. issues? No, sir, no. Night shift issues? As far as my mental health and physical health is good, I am okay for my learning years that I can do night shift also. Okay. Any questions you would love to ask us? So first of all, I would like to know about your experience in Capgemini. How how is Capgemini as a company? I know about it through internet and everything, but being a person at working at Capgemini, I want to know about from you. I want to know. Yes, I would obviously rate a positive rating and rest I'll leave a suspense for you. Wish you all the best. Your result will be communicated shortly over email. Okay. Okay, sir. Thank you. ओके सलोनी, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो आप, पानी वानी पी सकते हो, हम फीडबैक Yes, डिस्कस sir. करने जा रहे हैं. Yes, sir. I'm relaxed only. करें डिस्कस. Yes, sir. अच्छा पहले तो मैं बहुत ईगर हूँ, लाइक मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स का, आपका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है? Yes, sir. It is very good, and you are a very big inspiration to me because I also like teaching very much. And as I said, my most important need to book this slot was to meet you in person. And
have a good small conversation with you. And it is also very good. Knowledge Gate is providing very good content, and I have been following it since Sanchit sir's lectures, and you were not there. So yeah, it's very good, but still 2 points I would like to mention. I would like to give as a feedback if या I can मोस्ट give. वेलकम, हिंदी में भी बोल सकते हो आप, यू आर मोस्ट Yes. वेलकम, नाउ वी आर डिस्कसिंग फीडबैक, यस। Okay, so first of all, my InfyTQ course was not that up to the point. Means I had मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े अलग थे. एज आई नो कि मतलब हर साल मतलब थोड़ा पैटर्न चेंज होता है. दैट्स व्हाई आल्सो इट कैन बी रीजन. तो मैं थोड़ी वो हो गई थी, अरे नॉलेज गेट लिया इसमें तो क्वेश्चंस एकदम अलग थे, अभी क्वेश्चन एकदम अलग आया. एकदम जनवरी की बात है, बहुत पहले की बात है. सो बट मुझे ऐसे आपसे अच्छे से शेयर करना था. दैट्स व्हाई आई नोटेड दिस पॉइंट डाउन दैट इफ सर विल आस्क तो मैं सर को एडवाइस कर दूंगी एक बार. और ऐसा कैपजेमिनाई के भी सूडो कोड वाले में हुआ था कि इट वाज गुड, बट इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम विच आई हैव प्रैक्टिस्ड ऑन नॉलेज गेट. आई नो आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, तो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट व्हाट आई वो हैव मैं फाउंड. आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और बहुत आपने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने इस तरह के फीडबैक दिए, इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ना, हम पूरा फोकस सिर्फ मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स पर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं, फाउंडेशन उनका स्ट्रांग नहीं होता है, और वो सिर्फ Yeah. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भरोसे चले Yeah, जाते हैं। we expect same questions only हाँ, that कि अगर तो नॉलेज गेट में प्रीवियस ईयर पूछे. क्वेश्चन इज जस्ट अ हाँ. रेफरेंस पॉइंट, है ना। कंपनी Yes. बना, एक्चुअली क्या होता है ना, इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडक्टिंग बॉडीज। पहले क्या होता था, लिमिटेड कंडक्टिंग बॉडीज थी, एमकेट को क्यूब सी लिटमस थे, तो वहीं से क्वेश्चंस उठ करके आ जाते थे, क्योंकि मोरलेस ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे बच्चों के, ठीक है। और ऑफलाइन एग्जाम में ऐसा भी नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, चीटिंग करने का कोई स्कोप नहीं होता था, तो वही के वही क्वेश्चंस कंपनीज रिपीट कर देती थी। बट पिछले 2 साल में हम भी इस चैलेंज से फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जो कि टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो कंपनीज दे जस्ट कीप ऑन स्विचिंग द पोर्टल्स। दूसरा Yes, yes. कि ऑनलाइन में भी ये हो रहा है कि बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेके क्वेश्चंस इधर उधर डाल रहे हैं, तो क्वेश्चंस आर फ्लोटेड एवरीवेयर। तो इसलिए कंपनीज आर ट्राइंग कि हर बार किसी न्यू बॉडी से टाई अप करें, सो दैट हर बार कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों के पास आए, सो दैट चीटिंग करके बच्चे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चे ना दे पाए। तो ये मेन चैलेंज है। अब इन्फीटीक्यू के सिलेबस में इट वाज क्लियरली मेंशन्ड क्या क्या आने वाला है, बट पूरे क्वेश्चंस इस बार एसक्यूएल से डाल दिए। तो हाँ, exactly. All the questions were तो ये of तो table format. हाँ, अगर ये तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि नॉलेज गेट के कोर्स ने आपको बहुत ज्यादा उसमें हेल्प नहीं की होगी, बट ट्रस्ट में आप किसी और का भी कोर्स लेते ना, तो भी यही रिव्यू आता Yeah, this can also है be ना। the case. लोग इस Yes. पे बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट वी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है Yes, ना। sir. Yes, और sir. मेरे को इतना comfortable feel हो रहा है बोलने में. I have never हम्म, spoke this much with हम्म, anybody. So yeah, इसलिए this आप is. अगर एक चीज ध्यान रख दो, तो जितने भी इन्फीटीक्यू के बच्चे थे ना, उन सबको हमने एक एक करके कॉल भी किया था, एंड वी आस्क्ड एवरीवन टू अपग्रेड टू मेरा प्लेसमेंट होगा। क्योंकि अगर एसक्यूएल के बेसिक्स अगर आपने संजय सर से पढ़े होते ना कोर्स के अंदर जो कि प्रेजेंट है, तो Yes, फिर इट yes. वुड हैव बीन अ इजी टास्क फॉर यू, राइट। तो इसलिए अब हम ज्यादा फोकस ना हमारे एप्टी, रीजनिंग, कोडिंग, कंप्यूटर साइंस जो मॉड्यूल्स है ना, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन कंपनी स्पेसिफिक। क्योंकि अगर बच्चों का वो तैयार हो गया ना, तो फिर लाइक एक वो ये है कि कॉन्सेप्ट हाँ, बिल्डिंग हो गई, तो फिर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसलिए आप हाँ, देखो ये डे सही बाय बात डे है. हम टेस्ट और ऐड करते जा रहे हैं और अपडेट करते जा रहे हैं, है ना। हाँ. टीसीएस के कोर्स में आपने चैलेंज देखा होगा कि यार टेस्ट बहुत लेट अपलोड हुए। क्यों? क्योंकि वो पुराना सारा डेटा हमने डिलीट करके न्यू डेटा बनाया, न्यू क्वेश्चंस ऐड किए जो लेटेस्ट आए हुए हैं, सो दैट कि एटलीस्ट अगर इस साल टीसीएस प्लेटफॉर्म स्विच ना करे तो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। बाकी और प्लेटफॉर्म्स तो ये भी नहीं करते हैं, वही राइट। वही तो मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स आपको काउंट करा है. बाकी हम्म, बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, जैसे कि कैप जेमिनाई का गेम बेस्ड एप्टीट्यूड. पेपर देने के पहले मैंने वो सर्कल वाला किया था और वही आया. हम्म, वो टफ था, बट स्टिल मुझे एकदम न्यू नहीं लगा. वो ऐसा लगा अरे ये सर ने एग्जैक्ट यही था. उसका हम्म, टीसीएस का जो इंटरफेस है, आई हम्म, मस्ट से कि वो बिल्कुल सेम था, वैसा ही था बिल्कुल. और मैंने दिया भी वैसे ही था. मैंने स्विच नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद स्विच नहीं होगा. हम्म, तो अपने वाले में थी स्विच की चेंज, क्योंकि अगर अपन
किसी लोकेशन पे जाके देते तो वहाँ स्विचिंग का ऑप्शन था, बट मैंने फिर एक साथ ही दिया था जब प्रैक्टिस की थी, तो फिर एनक्यूटी में भी वैसे ही हुआ। ऐसा था। टेस्ट में हमने 5 टेस्ट में स्विचिंग बंद रखी थी, 5 में चालू रखी थी, सो दैट अच्छा बच्चों को अच्छा। दोनों का प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा था। क्योंकि हाँ। एक्चुअल पैटर्न में टीसीएस ने कुछ भी अपडेट नहीं किया था कि स्विचिंग वो अलाउड रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले। ठीक है, कमिंग टू मॉक इंटरव्यू का हाँ। कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा आपका ये? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत ही प्यारा लगा देख के, बोल के, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी, मतलब कि अभी हुई है ऐसे बोल के, और फिर एक दो इंटरव्यू दे दिए हैं, इसलिए तो मुझे इसको और हुँ, फ्लुएंट करना था। दैट्स व्हाई मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यही था कि और इंटरव्यूज दूं मैं ऐसे मॉक हुँ, वगैरह, तो अच्छा हो जाए। तो हुँ। आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, और इसमें अगर आपने देखा हो एक्चुअल इंटरव्यू इतना लंबा नहीं होता है, बट हमने इसलिए इसको किया बिकॉज़ मैंने आपके सारे एस्पेक्ट देखे, सी, जावा, हूप्स, एसक्यूएल, प्रोजेक्ट पर भी बात कर ली हमने, सेल्स फोर्स पर भी बात कर ली हमने, आपके कॉलेज के बारे में भी बात कर ली, एचआर क्वेश्चंस, सिचुएशनल क्वेश्चंस, सब कुछ, कोई कसर नहीं छोड़ी, लाइक आपकी सारी स्किल्स यस। हमने चेक कर ली। तो मैं तो आपको फीडबैक दूंगा ही, बट अपना बेस्ट फ्रेंड आप खुद हो, तो आपको क्या लगता है, लाइक क्या पार्ट मैंने अच्छा किया और कहाँ आपको लग रहा था कि यार इम्प्रूवमेंट की नीड है? एक तो वही कि और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं वो हम्म, एब्स्ट्रैक्शन वाले में थोड़ा सा हम्म, ब्लर हो गया था, वो वाला मेरा कंसेप्ट। हम्म, तो जावा के वापस मुझे रिवाइज करने चाहिए, हम्म, और एसक्यूएल में भी मैंने आंसर किया डिलीट और ये सब वाला, बट आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि वो सही होगा आंसर। तो वो भी, और प्रोजेक्ट ऑल्सो मैं और उसमें थोड़ा और इंक्लूड करूंगी कि हम्म। और ज्यादा चीजों का मुझे नॉलेज रहे, याद रहे उसे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट बताता हूँ। जैसे ना सबसे पहले तो रेज्यूमे की बात कर लेते हैं। रेज्यूमे में कॉलेज का आइकन भी मेंशन करो, इससे थोड़ा सा रेज्यूमे फॉर्मल लगता है। कंपलसरी नहीं है, ओके। बट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें ना जैसे कोई भी चीज़ हमारी पॉजिटिव होती है तो हम फ्लॉन्ट करते हैं उस चीज़ को कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर वो है। अभी आपके सीजीपीए 9.22 हैं, 10th में परसेंटेज 92 है, इतने बढ़िया हैं। अब जब मैं आपका एजुकेशन वाला पार्ट देख रहा था, मेरा फोकस जा रहा था आपके कॉलेज और स्कूल नेम्स पर, और वो परसेंटेज का फॉन्ट आपने इतना छोटा कर दिया कि उस पर हाँ, फोकस ही नहीं जा रहा। वो ग्रे है शायद, ये सब आई विल है ना, चेंज इट। फॉन्ट साइज भी बहुत छोटा है, तो कभी भी अपनी पॉजिटिव चीजों को हाइड नहीं करना, उल्टा फ्लॉन्ट करना है। यस सर। राइट, तो उसके फॉन्ट ओके। पर थोड़ा सा देखो। है ना, उसके अलावा प्रोजेक्ट आपने अच्छा लिखा, सब कुछ अच्छा किया, बट आपने क्या यू नो टेक्नोलॉजीज यूज की वो तो ठीक है, क्या टूल्स यूज किए, कौन सी आईडी वगैरह यूज की, प्लस क्या टीम साइज थी, आपका क्या रोल था, है ना वो, ओके। और उसके अलावा क्या कोर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ये प्रोजेक्ट। है ना, अब आपने ठीक तो है, ये ये लिख भी। दिया, आपने जीयूआई या मल्टी थ्रेडिंग जेडीबीसी इन सब का यूज किया, विच इज गुड इनफ। क्या प्लेटफॉर्म्स यूज किए, इक्लिप्स आईडी का यूज किया या विजुअल कोड का यूज किया, एंड ऑल दैट। उसके अलावा मेन चीज क्या है, प्रोजेक्ट लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, बट क्या, तो है ना, उसको मैं और एलेबोरेट करूंगी एलैबोरेट। जो आप जैसे। मेरा एक बार रेज्यूमे देखना, उसमें देखना प्रोजेक्ट हाँ। मैंने कैसे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ओके हेल्प, सर। इस चीज के लिए मत डरो, बच्चे घबराते हैं कि सर एक की जगह 2 पेज का रेज्यूमे हो जाएगा, कोई बात सर नहीं। सर वेट अ मिनट, सॉरी हम्म, सॉरी सर। हेलो। हाँ, हाँ, ठीक है। ऐसे अचीवमेंट में आपने लिख दिया सेल्स फॉर एडमिन सुपरसेट, यार अब सपने तो नहीं आ रहे ना, क्या है ये चीज, राइट। तो डिटेलिंग आप मेंशन करो, और इसमें भी देखो क्या होता है ना, जब आप डिटेल मेंशन कर देते हो तो कई बार आपके रेज्यूमे से ही सेटिस्फाइड हो जाता है इंटरव्यूअर, काइंड ऑफ, और कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ करके आपको सिलेक्ट कर लेता है। अब जब रेज्यूमे से क्लैरिटी नहीं होती ना, तो वो फिर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, और फिर जब क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्कशन होता है, नए नए टर्म्स निकलते हैं, फिर उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो कई बार ना बहुत डीप में चले जाते हैं और हम नर्वस हो जाते हैं, और हमारे लिए जो मामला है वो बिगड़ जाता यस सर। है ना। उसके अलावा एक चीज, रेज्यूमे के फ्लो देखो, सबसे पहले मैंने देख लिया सलोनी कौन है, ठीक है, एज ए इंटरव्यूअर मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, सलोनी का ये करियर ऑब्जेक्टिव है, सलोनी ने ये एजुकेशन कर रखी है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग हर स्किल्स, क्या स्किल्स उसने सीखी हैं, क्या सर्टिफिकेशंस किए हैं, क्या अचीवमेंट किए हैं, फिर क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द स्किल्स, राइट।
तो हम टिपिकली लेफ्ट टू राइट रीडिंग करते हैं, तो पहले लेफ्ट वाला पूरा पढ़ेंगे फिर राइट वाला पढ़ेंगे। स्किल्स आपकी राइट हैंड साइड में आ रही है, इट शुड आइडियल भी एजुकेशन के नीचे। गेटिंग माई ओके। पॉइंट, है ना? इस तरीके से। और सॉफ्ट स्किल्स बिल्कुल सबसे नीचे हॉबीज के ऊपर लिख सकते हैं, राइट? बिकॉज ठीक है। पहले टेक्निकल वाला अपना पार्ट लिख लेगा, फिर एचआर इंटरव्यूअर अपना पार्ट लिख लेगा, दे वोंट हैव टू सर्च थ्रू इट। ठीक है, और लास्ट में ओके। डिक्लेरेशन लिखना, ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, और डेट, प्लेस, सिग्नेचर। ठीक है, अब ये तो हो गई बेसिक बात। अभी अपन बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। इंट्रोडक्शन में आपने एक बात बोली थी कि जब आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बता रहे थे, यू सेड कि मुझे मेरी मॉम बहुत अच्छा फूड बनाती हैं, और क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो थोड़ा सा मैं इस चीज को लेकर स्ट्रगल करती हूँ, फूड प्रॉब्लम। डोंट से दिस लाइन। कल के दिन इफ दे सेंड यू चेन्नई, बैंगलोर और वॉट एवर जॉब लोकेशन, उनके मन में एक ही रहेगा कि सलोनी को फूड प्रॉब्लम है, मे बी वो सरवाइव ना कर पाए अच्छे से, कंपनी छोड़ दे, राइट? सो डोंट मेंशन दिस। उसके अलावा बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो आप डायरेक्टली ब्लंटली बोल रहे थे वेट 1 मिनट। आपका इंटेंशन वो नहीं था, बट इट शुड आइडियली बी, सर कुड यू वेट फॉर अ मिनट, लेट मी थिंक, ओके। राइट? रेदर देन डायरेक्टली सेइंग वेट वेट अ मिनट, कुड यू वेट फॉर अ मिनट। एंड उसके अलावा हैव गुड लिसनिंग एबिलिटीज। मैनेजर आपको जो बात बोलेगा वो 4 बार नहीं बोलेगा, यू हैव टू लिसन इट वंस एंड ग्रैब इट, है ना? तो आई आस्क्ड यू फॉर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपने सिर्फ स्ट्रेंथ बोली, देन आई अगेन आस्क्ड यू यस, फॉर योर वीकनेस। आई फॉरगॉट कि आपने पूछा, इतनी वीकनेस में भूल गई थी। तो फिर तो दिस मैं इज कंफ्यूज अबाउट हो गई कि लिसनिंग हाँ। एबिलिटीज। और हाँ। जब भी कभी कंफ्यूजन हो ना, गिविंग एक्स्ट्रा आंसर्स से कोई दिक्कत नहीं है, इट इट शोज अ गुड इम्पैक्ट ओनली, बट गिविंग लैक, मतलब जो नहीं बताया उससे दिक्कत है फिर। उसके अलावा इन योर टीम मैनेजमेंट, सी एवरी कंपनी दीज डेज वांट्स कि अलग से मैनेजर्स की हायरिंग ना करनी पड़े, क्योंकि होता क्या है, 5 साल बाद किसी मैनेजर को आप हायर करोगे ना, बहुत पैसा लेगा। बट अगर आप अपने ही एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत हाइक बना के मैनेजर बना दोगे, तो ट्रस्ट वर्दी आपकी कंपनी में काम कर रहा है। दूसरा, थोड़ा बहुत हाइक दे दोगे, खुश हो जाएगा, वो कंपनी में टिक जाएगा, मैनेजर बना दोगे, डबल खुश हो जाएगा। किसी दूसरी कंपनी का बंदा छोड़ के आपकी कंपनी में आ रहा है एज अ मैनेजर, वो आपकी टीम के साथ जेलअप नहीं कर पाएगा, कंपनी के प्रोटोकॉल्स उसको उतना नहीं पता, सैलरी भी ज्यादा चार्ज करेगा। तो एवरी कंपनी वांट्स कि उनके पास ऐसे एम्प्लॉयज हो जो कि आगे मैनेजर के लिए भी रोल प्ले करें। तो दे ऑलवेज चेक फॉर योर मैनेजेरियल स्किल्स। तो इसलिए हमेशा टीम टीम रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस होते हैं। तो जब इंटरनल क्लैश की बात आई, आपका पहला सॉल्यूशन वाज वेरी गुड, आई टॉक टू देम एंड ऑल दैट, है ना? एंड सर समटाइम्स आई फील कि हम ऑफ वर्क अगर जाते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। उसकी जगह आप बोल सकते थे कि मैं 6 से 7 दिन के लिए उनको वेकेशन दे दूंगी अलग से, सो दैट घर पे जाएं, माहौल चेंज हो, एंड मे बी उसके बाद जब वो रिटर्न करें, या मैं अपनी टीम को एक वेकेशन पे लेके जाऊं। दीज कुड बी गुड आंसर्स, बट अल्टीमेटली एट लास्ट यू सेड कि मैं कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या करूंगी, अपनी टीम से एक बंदा शिफ्ट कर दूंगी वहां पे, राइट? दिस इज यस नॉट सर। अ लीडरशिप क्वालिटी, राइट? ओके। तो आप एक डांसर हो, आपका कोई को डांसर अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो उसको ये थोड़ी ना बोलोगी भाई तू सामने वाले ग्रुप में जाके डांस कर ले, राइट? सी, सही बात है। आपकी नर्वसनेस ज्यादा है, आपको पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो, बट इंटरव्यूअर तो हाँ। चिलैक्स है, और उसका काम ही है आपकी एक एक बात को ऑब्जर्व करना, राइट? तो ये सब चीजें ऑब्जर्व होती हैं, तो इन सब बातों पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे थे, बट कई बार फ्लो फ्लो में ना आप भूल जा रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोल दे रहे हो। तो थोड़ा सा ओके। अवेयरनेस के साथ बोलना है, वॉट एवर वी आर यस सर। सेइंग, धीरे बोलो, यस आराम सर, से ये बोलो, मेरी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है। नहीं। मुझे पूछना था, मतलब जैसे मेरे प्रिपेयर्ड आंसर रहते हैं वो मैं बहुत अच्छा फ्लुएंटली बोलती हूँ, जैसे पर कोई अगर न्यू आंसर आता है तो ऐसा, तो मुझे, मैं आंसर अपने प्रिपेयर करती हूँ, वो भी खुद ही करती हूँ, बट फिर भी इंटरव्यू में मतलब उसी टाइम पे मैं सही आंसर नहीं दे पाती हूँ मैं ऐसा। बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। आप जब आपने पिछला इंटरव्यू दिया, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपकी इंग्लिश का फ्लो अच्छा नहीं था, आपको अच्छा करना है। अब उस इंग्लिश के फ्लो के बनाने के चक्कर में कंटेंट हिल गया। गेटिंग ओके। माई पॉइंट? तो भले इंग्लिश का फ्लो बिगड़ रहा है, आप धीरे धीरे आंसर्स दे रहे हो, ठीक है, बट आप सोच समझ के आंसर्स दे रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसमें ही मैंने बोला कि आपकी ज्वाइनिंग 1 साल डिले हुई, तो ज्वाइनिंग का मतलब क्या, यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर दैट,
तो you need to listen carefully the things which the interviewer is saying. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज और, इंटरव्यू का पर्पस क्या है, क्यों इंटरव्यू दे रहे हो आप? सिर्फ वही मॉक जानने के इंटरव्यू लिए कि पर्सनालिटी कैसी है नहीं, इंसान की, मॉक मतलब इंटरव्यू की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. एक्चुअल इंटरव्यू आप क्यों दे रहे हो, क्यों देने गए अभी जितने भी इंटरव्यूज आपने दिए, क्या पर्पस था? वही कि मतलब ओवरऑल इंसान कैसा है, मतलब उसकी वो तो पर्सनालिटी कैसी है कि वो तो कंपनी मेरा में। पर्पस है कि मैं आपकी पर्सनैलिटी जानूं या ये सब करूं. आपका एज ए स्टूडेंट क्या पर्पस है उस इंटरव्यू का? अच्छा, मेरा मेरा वही कि अल्टीमेटली जॉब लेना, प्लेसमेंट अल्टीमेटली लेना। कंपनी में सिलेक्ट होना, जॉब लेना. हाँ, हाँ। आपके इंटरव्यू से मुझे ये समझ में आया, बंदी की एचआर स्किल्स अच्छी हैं, सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं, बंदी की टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, बट कहीं से भी मुझे ये नहीं समझ आया कि आपको मेरी कंपनी में जॉब चाहिए. बताऊं कैसे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, which where do you rate yourself in programming and which is your favorite programming language? आपका आंसर क्या था? मैं सी से आउटडेटेड हो गई हूँ, लेकिन जावा मुझे आता है. मैं अपना आंसर बताऊं? हम्म, Sir, I would rate myself 6.5 to 7 in programming, and I'm day by day I'm gaining interest in that. Since we are the child of COVID era, so it was a bit challenging situation for us. That's why I could not grab my hands much on coding, but now I am good at pace, and it's like a exponential growth for me. Coming to programming languages, I learned C, but right now I have not revised it, so I may not be able to answer your questions properly. But what I have learned in the past few days is Capgemini works in Java. As per the Quora reviews, I've also talked to many seniors, and as a result of which, since Capgemini is my dream company, and I have been working hard for this company since long, and as a result of which I've cleared the written exam, and I'm here in front of you for the interview. So I have heard that Capgemini works on Java, as a reason of which I have learned Java, and I have also heard that your company uses a lot of database, and SQL is a very required skills for that. For the same, I have learned the basic SQL commands also. टेक्निकल स्किल्स और अच्छे से बतानी थी और पूरा अच्छे से कंपनी नहीं, के साथ आपने अलाइन मेरा, करके। हाँ एग्जैक्टली, एवरी आंसर शुड बी अलाइन टू कंपनी. ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं सांस भी क्यों ले रही हूँ, कंपनी के लिए. सही राइट. बात है। कंपनी आपसे नहीं पूछेगी आपको हमारे पास जॉब करनी है कि नहीं करनी है. भाई 10 कैंडिडेट में 3 सिलेक्ट करने हैं उसको, है ना. पूरे 10 के 10 कैंडिडेट ने बताया होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है. आपको क्यों सिलेक्ट करें? 10 के 10 कैंडिडेट को जावा आता है, आपको क्यों सिलेक्ट करें? तो अगर आप 5 से 6 बार इनडायरेक्टली उनको कन्विंस कर लो कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज फॉर द जॉब एट योर कंपनी, they'll feel good about it. Ultimately, your selection and rejection is the hand of a human, and human play with emotions. So you'll have to play with emotions of the interviewer, right? कल के दिन जिस बंदी को, सलोनी को मैंने सिलेक्ट कराया, सलोनी अच्छा परफॉर्म करती है, मेरा नाम कंपनी में एज एचआर ऊपर होगा, मुझे अप्रेजल्स मिलेंगे वैसे. तो ऑब्वियसली आई वुड जेन्युइनली लुक फॉर अ पर्सन. इट्स नॉट कि मुझे सैलरी मिल रही है, इट्स कि मुझे अप्रेजल्स भी उसी बेसिस पर मिलते हैं कि मेरा बंदा जिसको मैंने हायर किया वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. तो आई वुड जेन्युइनली रेफर अ गुड पर्सन, राइट. और आपका कैपजेमिनी को लेके डेडिकेशन जब मैं देखूंगा, ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट यू over other people. Yes, sir. Right? I have made a Yes, sir. project in Java because in Capgemini most of the projects are in Java only. You can align all the answers to Capgemini. वही आंसर्स में सेम कंटेंट सेम रहेगा, बट कंपनी को फिर और इंक्लूड कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा. ठीक ओके है, सर. कुछ पूछना है यस आपको? सर, दैट्स ऑल. That's all. चलो. यस सर. सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू. मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी. यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजन सर. जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें. थैंक यू सो मच.